अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल द मैथ्स नोटबुक। व्यूवर्स, आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 12। तो चलिए चैप्टर नंबर 9 को एक नज़र देख लेते हैं। जी, दिस इज़ आवर चैप्टर नंबर 12, यूनिट नंबर 12। यूनिट नंबर 12 is based on line bisectors and angle bisectors. The unit outlines are bisector of a line segment and bisector of an angle. Means we have to study in this chapter two things. One thing is bisector of a line segment and the other things is the bisector of the angle. Bisector of a line segment and bisector of the angle. और फिर उन्हीं की प्रॉपर्टीज़, बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट एंड बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल्स की डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ हम इस यूनिट में स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट और बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल की डेफिनेशंस पर। जी, माय डेफिनेशन इज़ राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। A line is called a right bisector of a line segment if it is perpendicular to the line segment and passes through its midpoint. This is the definition of right bisector of a line segment. So for the understanding of this definition we have to study few things. First thing is right bisector. First of all we check out bisector, then right bisector and then the line segment. So bisector, first of all we have to check the definition of bisector. Bisector mean a line passes through another line at its midpoint. Means कि ये लाइन इस दूसरी लाइन को इसके मिड पॉइंट पर बाइसेक्ट करती है। मिड पॉइंट का बाइसेक्टर मीन ये एक लाइन इस फुल लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये आपस में इक्वल है। दीज टू डिफरेंसेस आर इक्वल विद each other. So this is called the bisector. Bisector mean divide into two equal parts. Divide into two equal parts. Now what is meant by right bisection? What is meant by right bisection? Right bisection mean the 90-degree angle. Right bisection mean right mean 90 degree and bisection mean divide into two parts. So by the definition I have a diagram of this. This is a line segment. This is A, B. This is A point. This is B point. A, B point. ये A, B point, ये A, B लाइन और ये दूसरी एक लाइन हमारे पास this is L. This is called the line segment. Line segment, a line which has two end points. टू एंड पॉइंट्स मीन दीज आर नॉट एक्सटेंडेबल. ये पॉइंट, ये लाइन इससे आगे नहीं जा सकती. ये लाइन इस तरफ से आगे नहीं जा सकती. ये इसी जगह पर एंड हो जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए 2 सेंटीमीटर, तो आप स्केल लेकर 2 सेंटीमीटर प्रॉपर वे में उसको राइट करते हैं. उससे एक पॉइंट भी स्केल से लाइन आगे नहीं जाती. दिस इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट. सो अ लाइन विच हैज़ टू एंड पॉइंट्स, दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट. तो ये एक लाइन L इस लाइन A B को इसके मिड पॉइंट पर पास कर रही है. मीन्स इस लाइन का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक सेम है. और ये लाइन क्या बना रही है हमारे पास? 90 डिग्री का एंगल. 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. दिस इज कॉल्ड द राइट बाइसेक्शन. सो बाय द डेफिनेशन a line is called a right bisector of a line segment. A line is called the right bisector of the line segment if it is perpendicular. Perpendicular mean making 90-degree angle. This means making 90-degree
एंगल टू द लाइन सेगमेंट, मीन्स कि ये लाइन इस लाइन के साथ, इस लाइन सेगमेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है एंड पासिस थ्रू इट्स मिड पॉइंट, और वो इसके मिड पॉइंट से पास करती है, मीन्स सी इज मिड पॉइंट and this line L passes through line segment AB at its midpoint. So this is called the right bisector of a line segment. Now we have to study about bisector of an angle. Bisector of an angle. Bisector of an angle mean a ray is called a bisector of an angle if it's divide an angle into two equal parts. A ray, what is ray? Ray is a line which has one end point and on other side it is extendable. A line which has one end point and on the other side it is extendable. एक तरफ से वो आगे की तरफ बढ़ सकती है, दूसरी तरफ से वो आगे की तरफ नहीं बढ़ सकती. दिस इज नॉट एक्सटेंडेबल. सो दिस इज कॉल्ड अ रे. A ray, that ray is called a bisector of the angle if it's divide the angle into two equal parts. So by the definition, I have an angle. Angle is measurement angle AOB. This whole angle, this is an angle. If you ignore this line, this is an angle. This whole angle. An angle, a ray. Now I am talking about this ray, OC. This is the ray, one end point and on the other side this is extendable. This is the end point of this and on the other side it is extendable. So OC is a ray. OC ray divide this angle AOB. Divide this angle into two equal parts. That's why this OC is called the bisector of the angle. This OC is called the bisector of this angle. Now I am going to start to review the exercise 12. Review exercise number 12. From review exercise number 12, my question number 1 is which is true and which is false. Means there are true, false, so we have to find which true, false, which given statement is true or not. So our first statement is bisection means divide into two equal parts. So by this definition of bisector, we also know that bisector mean divide a line into two equal parts. So bisection means divide into two equal parts. So this is true. G. Second, right bisection of a line segment means to draw perpendicular which passes through the midpoint of the line segment. So by this we also know that right bisection, this is right bisection of a line segment. Right bisection, right mean making 90 degree angle, bisection mean divide into two equal parts. So right bisector of the line segment is to draw perpendicular. This is the perpendicular on this line, this is the perpendicular is making 90 degree angle which passes through the midpoint of the line segment. Yes, this is passes through the midpoint of the line segment. So this is true. MCQ number 3, statement number 3 is any point on the right bisector of a line segment is not equidistant from its end points. I am again reading this.
any point, there is one point on the right bisector of the line segment, means right bisector which is making 90-degree angle and divided into two equal parts of a line segment is not equidistant, means that point is not equidistant from its end point. The end points belongs to the line segment. Any point on the right bisector of a line segment is not equidistant from its end points. So इस स्टेटमेंट के लिए अब हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं जी. दिस इज अ डायग्राम. ही सेड एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट. This is a right bisector AB. A and B are the end points of this line segment, and this is the right bisector. This is the right bisector which is passes through the midpoint and making 90-degree angle. On the right bisector of a line segment, there is any point P. Any point is on the right bisector of a line segment is not equidistant, means that point is not equidistant from the end points of its end points. मीन्स कि अगर हम डिस्टेंस चेक करें P से लेकर A तक और P से लेकर B तक, तो ये आपस में इक्वल नहीं होगा. सो फ्रॉम द डायग्राम दिस इज इक्विडिस्टेंस. ऐसा नहीं होता कि राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी हम पॉइंट लें और उसका डिस्टेंस जो है फ्रॉम A एंड फ्रॉम B इक्वल ना हो. दिस इज़ नॉट पॉसिबल. डायग्राम से भी आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि डिस्टेंस फ्रॉम P to A एंड P to B इज़ सिमिलर. दीज आर सेम. दिस लाइन इज सिमिलर टू दिस. सो दिस इज फॉल्स. My next statement is statement number 4. Any point equidistant from the end points of the line segment is on the right bisector of it. Any point which is equidistant from the end points of a line segment is on the right bisector of it. So for this again we have to, this statement again we have to discuss from diagram. So again the diagram is same because these two statements are the converses of each other. So any point on the right bisector of a line segment, any point on the right bisector of the line segment, equidistance from the end points, equidistance from the end points. ये दोनों statements जो है वो एक दूसरे का कन्वर्स है. पहले पॉइंट को कहा गया है कि वो लाइन सेगमेंट किसी भी राइट बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेगा तो उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से उसका डिस्टेंस सेम होगा. दूसरी बात है एनी पॉइंट विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स. कोई एक पॉइंट जिसका डिस्टेंस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वल है. कोई भी एक पॉइंट जिसका डिस्टेंस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट के इक्वल है, दीज आर इक्वी डिस्टेंस, इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट. तो वो पॉइंट जो है वो लाजमी राइट बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है. तो P हमारे पास एक ऐसा ही पॉइंट है जो कि राइट बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है और उस P का डिस्टेंस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से बिल्कुल सेम है. सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. जी, माई फिफ्थ स्टेटमेंट इज़ the right bisector of the sides of a triangle are not concurrent. The right bisector of the sides of a triangle means there is a triangle, then its sides and the bisector of the sides are not concurrent. So we have to prove this with the help of a diagram. जी, so according to the statement I have a triangle ABC. So he said a triangle whose three sides and the bisector of the sides. So I am going to draw the bisector of these sides of a triangle. This is one side, this is second side and this is third side. Right bisector mean कि इस लाइन को कोई एक तीसरी लाइन इसके मिड पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए
पास थ्रू करेगी। तो हमने ये प्रूव करना है कि इन तीनों के राइट बाइसेक्टर्स कंकरेंट नहीं हैं। कंकरेंट मीन वो सेम पॉइंट से पास थ्रू नहीं करते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रा द bisectors of the sides of a triangle. Bisector of the sides of a triangle I have to draw. I think so this is the midpoint. So this is the midpoint and the line which is passes through this midpoint making 90 degree angle. 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस पॉइंट को पास करते हुए एक लाइन पास थ्रू करेगी. दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ OC. So I will write it O. O is the midpoint of the line BC and this line L making 90 degree angle. इसी तरह से हम साइड AC का बाइसेक्टर बनाएंगे. So this is the side AC and the midpoint of this line is the midpoint. So making 90 degree angle. This is the 90 degree angle of this side. So AC I will write this is O prime. This is the midpoint of AC and this is the right bisector making 90 degree angle. Now I will draw the right bisector of A and B. So this is AB, the midpoint of AB. First of all I will find the midpoint of AB. This is the midpoint of AB. So I will draw the 90 degree angle, the straight line. Look, this is a straight line. So straight line बनाते हुए ये इधर से pass through कर गया and this is again making the 90 degree angle and I will write this is O double prime. So this is a diagram A, B, C and these are the three bisectors of the sides of a triangle. Our statement is right bisector of the sides of a triangle. So these three are 1, 2 and 3 are the bisectors of the triangle. These are not concurrent. Concurrent mean a point where two or more than two lines passes through. तो देखिए तमाम के तमाम लाइंस एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं. ये लाइन भी इसी पॉइंट से पास कर रही है, ये लाइन भी इसी पॉइंट से पास कर रही है और ये लाइन भी इसी पॉइंट से पास कर रही है. मीन्स दे आर पासेस थ्रू द सेम पॉइंट. दैट्स मीन दीज आर concurrent. So according to this the statement is wrong. So I will write false. जी next statement is statement number 6. The bisector of the angle of a triangle are concurrent. The bisector of the angle of a triangle. Now we will draw the bisector of the angle. So this is again a triangle. Now I will draw the bisector of the angle. Means my first angle is this one, my second angle is this one and my third angle is this one. So I will draw the bisector of these angles and check are these concurrent or not. So this is my angle and its midpoint is this point. So I will draw the line. This is the bisector of first line, then this point B and its bisector is this is approximately the midpoint of this. Now I will draw the this is the bisector of this angle, means these two portions are equal with each other. Now I will draw the bisector of C. So the midpoint is this, and if I will draw look, the bisector of the angles passes through the same point. That's mean bisector of the angle of a triangle are concurrent.
means these are passes through the same point. So these are concurrent. This statement is true. Now my next statement is any point on the bisector of an angle. Any point on the bisector of an angle is not equidistant from its arms. So again we have to draw a diagram and understand this statement. Is it true or false? So this is angle AOB. This is an whole angle, and OC is the bisector. OC ray is the bisector of this angle, means this ray divide this angle into two equal parts. So we have to take a point P. Any point on the bisector of the angle. Any point on the bisector of an angle is not equidistant from its arms. These two are called the arms of the angle, mean OA and OB. OA and OB are called the arms of the angle, means these two lines making this angle. That's why these two are called the arms of the angle. So we have to take any point P on the right bisector of the angle and take a distance from this point to this and this point to this. These are equal with each other. So our statement is wrong. Any point on the bisector of the angle is not equidistant from its endpoint. This is false. These two distances are same. Now our next statement, any point inside an angle equidistant from its arms and is on the bisector of it. Again we have to study about the diagram. Any point inside an angle. I will take any point P inside the angle. दिस इज़ द एंगल AOB. इस एंगल AOB के बिल्कुल दरमियान में मैंने एक पॉइंट ले लिया. दिस इज़ P विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म. और इस P का डिस्टेंस जो है वो इसके दोनों आर्म से इक्वल है. मीन्स यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंसेस दोनों सेम है. दैट्स मीन दिस पॉइंट इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट. वो P पॉइंट इसके बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है. यस, OC, दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल. सो आवर स्टेटमेंट इज ट्रू. So this is the end of question number 2. Now I am going to start question number 3. Now I am going to start question number 2. Question number 2 is if CD line segment, CD is a line segment. This symbol denotes line segment. If CD is the line segment, is right bisector of the line segment AB. CD line segment is right bisector of the line segment AB. Then we have to find the value of measurement OA and measurement AQ. This diagram is given with the question. This is the line segment AB and this line is C. This is a line. This line CD. Now if this CD is the right bisector of this line segment, making 90-degree angle. 90-degree angle mean this is a straight line and bisection this on the midpoints, mean this distance is equal to this one. So is he said that measurement OA must be equal to measurement OB. So these two distances are same, OA and OB. So I will write measurement OB. Next we give measurement AQ is equal to AQ, means we have to find the distance from A to Q. This AQ must be equal to BQ because we also know that any point is on the right bisector of the line segment has equal distance from its end points, mean PA equal to PQ.
B. So similarly, this Q point is on the right bisector of the line segment AB. So if this is lie on the right bisector of the line segment, then the distance from Q to B and A to Q and B to Q is equal. So I will write this is measurement B Q line segment. My next question is question number 3. Define the following: bisector of the angle and bisector of line segment and bisector of an angle. So इसके लिए हम लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट और बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, तो ये हम वहाँ से इजीली कर सकते हैं जी. क्वेश्चन नंबर 4. इफ़ द गिवन ट्रायंगल ABC इज़ इक्विलेटरल ट्रायंगल. सबसे पहले तो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हमारे के लिए बहुत ज़रूरी होती है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है. हमारा सबसे बड़ा फॉल्ट ये होता है कि हम क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते और फुल अटेंशन के साथ नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से हमें मालूम नहीं होता कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है. सो in the given triangle ABC is equilateral triangle. So what is equilateral triangle? Equilateral triangle mean a triangle whose all sides are equal in measure and all angles must be equal to 60 degree. A triangle whose all sides are equal in measure, जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं मेजरमेंट के. फॉर एग्जांपल दिस इज 6 सेंटीमीटर, तो 6 एंड 6 एंड ऑल द एंगल्स मस्ट बी इक्वल टू 60 डिग्री. कि उसके जितने भी एंगल्स होते हैं, ट्राइंगल हैव 3 एंगल्स, सो ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री. सो ही सेड द गिवन ट्राइंगल ABC एज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. के ये जो हमारे पास गिवन ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, इसके तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं एंड AD इज़ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल A. मीन्स AD इज़ द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल A. मतलब AD लाइन जो है वो A एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. देन वी हैव टू फाइंड वैल्यूज़ ऑफ अननोन्स x डिग्री, y डिग्री एंड z degree, means x, y and z. So according to the given conditions, when we have to start my solution, triangle ABC is an equilateral triangle whose all sides and all angles are equal in measure and each angle is equal to 60 degree. In triangle ABC, triangle ABC is an equilateral triangle. Equilateral triangle whose all sides and angles are equal in measure and each angle is equal to 60 degree. That's mean all these sides are equal and all the angles, means this angle and this angle equal to 60 degree. So
measurement angle B is equal to Z. So Z is equal to 60 degree because this is the angle of an equilateral triangle. Now I am talking about measurement angle A. So this is equal to again 60 degree, and measurement angle AD is bisector of measurement angle A. That's mean x degree is equal to y degree. If these two are equal with each other and whole angle is equal to 60 degree, that's mean x is equal to 30 degree and y is equal to 30 degree, because each angle is equal to 30 degree. So this is the end of this question. Now I am going to start question number 5. So this is question number 5. Question number 5 is in given congruent triangle. Congruent triangle means two triangle which are equal with each other. दो triangles ऐसी जो कि एक दूसरे के equal हैं. LMO and LNO. LMO. This triangle is equal to LNO. This triangle. ये triangle इस triangle के equal है. Then we have to find XM. We have to find the value of this x and this m. So in the congruency of two triangle, in congruency of two triangle, all the corresponding sides are equal with each other. So if triangle LMO is congruent to triangle LNO, that's mean measurement LM congruent to LN. Measurement LM line segment is congruent to measurement LN line segment. So this is equal to this one. So 2x plus 6 is equal to 18. So by simplifying, 2x is equal to congruency 18 minus 6. So 2x is equal to 12. This is a congruent sign. So x is congruent to 12 over 2. 2 ones are 2, 2 6 are 12. So x is congruent to 6. Now I will find the value of m. So LO is the bisector, this angle, this side and this side. So measurement OM line segment is congruent to measurement ON. So measurement OM is equal to m and measurement ON is equal to 12. So m is equal to 12. This is the end of question number 5. Now I am going to start question number 6. Question number 6 is CD line is the bright bisector of the line segment AB. So we have to find if measurement AB is equal to 6 centimeter, then find measurement AL and measurement LB, and if measurement BD is equal to 4 centimeter, then find measurement AD. And this diagram is given with this, mean this ACD line is the bisector of this line segment AB. This line segment AB. So we will write
CD line is the bisector of AB line segments. AB line segment and passes through its midpoint L. That's mean measurement AL is congruent to measurement BL. So AB whole and AL is half and BL is half, means measurement AB must be equal to measurement AL plus measurement BL. So if AB is equal to 6 centimeter, then this is congruent to 3 centimeter plus 3 centimeter. So each side has 3 सेंटीमीटर के फुल लेंथ अगर 6 सेंटीमीटर है और ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये इन दोनों पार्ट्स को हाफ हाफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. तो अगर ये फुल लेंथ 6 है तो हाफ 3 इधर हो जाएगी और 3 इधर हो जाएगी. सो मेजरमेंट AL इज़ 3 सेंटीमीटर, मेजरमेंट AL इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, measurement BL is equal to 3 centimeter. Now I am doing second part. If measurement BD is equal to 4 centimeter, means this BD is 4 centimeter, then find measurement AB, means I have to find this length AD. So we also know that any point is on the right bisector of line segment is equidistant from its end points. सो हमारा D पॉइंट जो है वो इस राइट बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है, जो कि AB का राइट बाइसेक्टर है, और इसको इस मिड पॉइंट पे पास थ्रू करता है. तो क्योंकि ये राइट बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है तो इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम A एंड फ्रॉम B इक्वल होगा. तो B के अगर इक्वल होगा तो मेजरमेंट BD मस्ट बी इक्वल टू मेजरमेंट AD. So if BD is equal to 4 centimeter, this must be congruent with measurement AD. So we have to find AD. This is our answer. So this is the end of this chapter. I hope you will understand it. If you like my lecture, my method, then please subscribe my channel and please like the button. Thank you so much.